Okay, let's start with this question. The diagram shows parts of the curves y equals 9 minus x cube and y equals 8 over x cube, and the points of intersection P and Q. The x coordinates of P and Q are A and B respectively. We need to show that x equals A and x equals b are roots of the equation x raised to power 6 minus 9x cubed plus 8 equals 0. And then we need to solve this equation and hence state the value of a and the value of b. Okay, now let's think about this. We have two curves and their points of intersection are p and q. We need to show that the x coordinates of p and q are satisfied. We need to show that x equals a. So x equals a is basically the x coordinate of p and b is the x coordinate of q. We need to show that these two are roots of the equation this. Now, how do you find points of intersection? Points of intersection are found by solving the two equations simultaneously, right? So if you solve this equation and this equation simultaneously with each other, you find their points of intersection. Let's see what we get from that. When we try to do that, we get y equals 9 minus x cubed. This is one equation. And the other one is y equals 8 over x cubed. अगर आपको x coordinates चाहिए points of intersection के, अब इन दोनों को equate कर दोगे, y को eliminate कर दें, इन दोनों को equate कर दें. What does that give you? 9 minus x cubed equals 8 over x cubed. Now multiply x cubed on the left side. That gives you 9x cubed minus x raised to power 6. Let's bring this 8 to the left side as well. That becomes minus 8 equals 0. And you multiply this by minus 1. That gives you x raised to power 6 minus 9x cubed plus 8 equals 0. And that's the equation that was given here. So when we equate these two functions, we get this equation. The solutions of this equation should give us the points of intersection of these two functions, which are p and q. तो x equals a and x equals b, ये जो होंगे ये इसी equation के solutions हैं. तो आपको करना क्या था? सिर्फ इन दोनों को equate करना था. equate करके आपने ये show कर देना. equate करके आपके पास वही आता है. जो उसने equation दी हुई है वही equation आपको मिलती है उससे. ठीक है? I was thinking I solve this equation and hence state the value of a and the value of b. Now, how do you solve this equation? This is an equation in which powers are in the ratio 2:1. इसको आप quadratic में convert कर सकते हैं, right? This is power 3, this is power 6. You can use a substitution here. Let's say u equals x cubed, and that would convert this to a quadratic equation instead. So it becomes u squared minus 9u plus 8 equals 0. Can we solve this equation now? We can factorize this. It will become u squared minus 8u minus u plus 8 equals 0. Factorize this, and that gives you u into u minus 8 minus 1 into u minus 8 equals 0. There are two factors that we get from this, u minus 1 and u minus 8, which means u equals 1 or u equals 8. Put that substitution back. You get x cube equals 1 or x cube equals 8. So x equals 1 or x equals 2. ये दो x की values आ गई. These are the x coordinates of the points of intersection of these two graphs. Right? Now, A is x coordinate of P and B is the x coordinate of Q. What are the values of A and B now? You can see on the graph, A is supposed to be a smaller number, B is supposed to be a bigger number. That means A should be equal to 1 and B should be equal to 2. ये आपके पास A और B की values आ गई, ये आपको figure out करनी थी. ठीक है? These are the values of A and B that we have. That's the first part. Now let's move on. In the second part, it says, find the area of the shaded region between the two curves. So we already talked about this before. How do you find area between two curves?
you find the area under the upper curve, subtract from that the area under the lower curve. So find this total area, subtract from that this area, and that will give you the required shading region. Okay, let's do that now. Part 2. Shaded area in this case is going to be equal to area under the upper curve and we subtract from that the area under the lower curve. What's the upper curve here? The upper curve is 9 minus x cubed. Y equals 9 minus x cubed. That's the upper curve. The lower curve is y equals 8 over x cubed. Or we can write that as y equals 8x raised to power minus 3. These are the two functions that we have. We can see the limits on the graph. Limits are, so we know the value of a is 1, the value of b is 2. So the limits are from 1 to 2. दोनों के areas find कर लें 1 से लेकर 2 तक और उनको subtract कर लें. Now there are two ways of thinking about this. One way is that you just do it together. 9 minus x cube का इकट्ठे find कर लें. 9 minus x cube. And उसी function में से इसी step में 8x raised to power minus 3 minus कर दें. First function में से second function subtract कर दें. इनको इकट्ठे integrate करके limits डाल दें. That's one idea. पहले आप functions को subtract कर लें, उसके बाद integrate करें और limits डाल दें. Okay? That's one way to do it. Another way to do it is that you deal with them separately one by one. पहले आप upper curve का निकाल लें अलग से, उसमें से lower curve का minus कर दें. That's also fine. The other one was quicker, but this is safer because इसमें आपके ना sign errors थोड़े से कम होते हैं अगर आप अलग-अलग से कर लें. तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, even though it might take a couple of steps longer, but it doesn't make any difference. उसमें कुछ seconds ही extra लग रहे होंगे आपके, and that should be okay, as long as you're making sure that you're not doing any careless errors. So ये आपके पास first area आ गया, subtract from that the second area. Second area कौन सा है? इसमें 8x raised to power minus 3 input करना है, इसको integrate करना है with limits from 1 to 2. ये दो areas आपको figure out करने हैं, उनको subtract कर लेना है, ठीक है? 9 minus x cube के नीचे वाला area कैसे आएगा? Remember the formula? The formula is integral of y with respect to x. That's the formula for area between graph and x-axis. This is what we use here. इसमें आपको क्या करना है? Simply आप values input कर दें और integrate कर लें और values input कर दें, ठीक है? Limits input कर दें. 9 का integral क्या होएगा? 9x, x raised to power 3 का integral, x raised to power 4 over 4. You need to input the limits from 1 to 2 here. Subtract from that the second one, 8x raised to power minus 3 का integral, 8x raised to power minus 2. Power आपने power में 1 add कर दिया, divide by that increased power. That's the integral that you get from the second one. And the limits are from 1 to 2 for this as well. You can do some cancellation here. And the second one, उसको cancellation करके पहले simplify कर लेते हैं, उसके बाद limits input कर दें. First वाले में तो हम directly limits input कर सकते हैं. 9 into 2 minus 1 raised to power 4 over 4. This is what we get. So 2 raised to power 4 over 4. This is what we get when we input 2 as the limit. Subtract from that the case when you input 1, that gives you 9 into 1 minus 1 raised to power 4 over 4. This is the area under the upper curve. Subtract from this the area under the lower curve. अब इसके अंदर limits डाल दें. इसको पहले हम थोड़ा सा simplify कर लेते हैं. It will actually become minus 4 over x squared. Right? 2 and 8 get cancelled. We're left with 4, and that becomes minus 4 over x squared. Limits input कर दें 1 से लेकर 2 तक इसमें. We'll do that in the next step. यहाँ पे left side पे क्या मिलता है हमें? 18 minus 4, which is 14. Subtract from this
this thing, that's 9 minus 1 over 4, that should be 35 over 4. ये आपके पास एरिया अंडर द अपर कर्व आ गया, इसमें से आप माइनस कर दें एरिया अंडर द लोअर कर्व, उसमें आपके पास क्या आ रहा होगा, -4/2 squared and then -4/1 squared. जब आप 2 और 1 input limits input करेंगे इसके अंदर, this is what you would get from that. Now you can simplify everything. It becomes 14 minus 35 over 4 minus, it becomes plus. We have 1 from here, and then minus into minus into minus, that becomes minus, and that gives you -4. Evaluate this and see what you get. ये क्या आता है? Nine over 9/4. So the area turns out to be 9/4, and that is what we were looking for. You could write it like this, or you could say this is 2.25. दोनों तरह से आप लिख सकते हैं. That's your final result. That's the area of the shaded region that we were looking for. Make sense? अच्छा, यहाँ पे sign errors ना बहुत ज़्यादा होते हैं. One way to make this simpler, make the calculation simpler is कि आप ये इकट्ठा ना ही लगते हैं इनको. ठीक है, वो माइनस माइनस वो मल्टीपल आर टाइम्स आ जाते हैं उसमें ना, वो प्लस माइनस के बहुत एरर्स होते हैं इसमें. आप ये कर लें, इसको अलग से पहले इवेल्युएट कर लें, इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा 14 माइनस 35. ये आपने अलग से इवेल्युएट कर लिया, इसको आप अलग से इवेल्युएट कर लें साइड पे. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू convert it to that form, I would say this is going to be like this instead, ताकि वो एरर आपसे नहीं हो. आप उसको इस तरह से ब्रेक कर सकते थे कि ये अपर कर्व को आपने बिल्कुल सेपरेट रखा और लोअर कर्व वाला आपने सेपरेट रखा इस तरह से. ये आपने साइड पे ये कैलकुलेशन कर ली, दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन कर लें, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू डोंट डू एनी केयरलेस एरर्स हियर. तो आप इसको अलग से इवैल्यूएट कर सकते हैं, इसको अलग से इवैल्यूएट कर सकते हैं. ये आपके पास इधर क्या आ रहा होगा, -1 + 4 एंड दिस इज गिविंग यू 3 एज द रिजल्ट. और जो दूसरा वाला एरिया उससे आपको क्या मिल रहा है, 56 minus 35, that's 21/4. दोनों एरियाज आपने अलग अलग इवैल्यूएट कर लिए. ठीक है, जब दोनों एरियाज आपने अलग अलग निकाल लिए, बिल्कुल एंड पे जाके फिर आप क्या कर लें, इनको सेपरेट कर लें. ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे आपके पास, लेट्स से दिस इज एरिया 1, दिस इज एरिया 2, दोनों आपने अलग अलग इवैल्यूएट कर लिया. And now you say the shaded area therefore is the difference between the two, and that is 21/4 minus 3, which gives you 9/4 or 2.25. Okay, तो आप इसको सेपरेटली लिखेंगे, उससे अक्सर क्या होता है कि आप ना केयरलेस एरर से बच जाते हैं, साइन एरर्स थोड़े से कम हो जाते हैं. ठीक है, ऑल्दो द एंड रिजल्ट रिमेन्स द सेम, लेकिन आपके साइन एरर्स थोड़े से बच जाते हैं. ठीक है, एनी प्रॉब्लम विद दिस, एनी क्वेश्चंस? No, sir. No. Okay, let's look at the last part and then we end for today. Okay, last part says the tangents to the two curves at x equals c, where c is between a and b. So there is some point here between a and b, are parallel to each other. So the tangents are parallel to each other. We need to find the value of c. Now, what does that mean? So let's say we have a value of x here, that is c.
The question is basically saying इस पे जो tangents बनेंगे वो parallel होंगे एक दूसरे के. So यहाँ पे तो parallel नहीं आ सकते. One is going to look like this and the other is going to be like this. कर लें थोड़ा सा तो यार इस तरह की कुछ सिचुएशन होगी अगर आपके पास सी होता फॉर इंस्टेंस समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पे कोई सी आ रहा होता तो जो टेंजेंट्स बनेंगे, देखिए एक टेंजेंट यहाँ पे रहेगा और दूसरा टेंजेंट इसी वैल्यू ऑफ सी के ऊपर इधर होएगा. दीज टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो आपको ये वैल्यू ऑफ सी फिगर आउट करनी है जहां पे दोनों के टेंजेंट्स पैरेलल होंगे, उनकी सेम डायरेक्शन होगी. ये पॉइंट फिगर आउट करना है, एक्स की वैल्यू फिगर आउट करनी है जहां पे दोनों दोनों कर्व्स के टेंजेंट्स पैरेलल हैं. व्हाट डू यू थिंक, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? एनी आइडियाज? कैन आई रेज ऑफ हैंड्स? Can everyone raise their hand? Okay, now only raise hand if you have an answer to that question. What do you think? कैसे फाइंड करेंगे, क्या करें? C की वैल्यू फिगर आउट करनी है. C is the value of x where the two tangents are parallel to each other. How can we find that value? Yes, Iman. Harsh? Okay. Anyone other than Zainab? C की वैल्यू कैसे आ सकते हैं यहाँ पे? C is the point or C is the value of x at which the two tangents are parallel. फर्स्ट कर्व का टेंजेंट भी उस x की वैल्यू पे उसकी वही डायरेक्शन है जो सेकंड कर्व के टेंजेंट की डायरेक्शन है. दे आर द सेम डायरेक्शन. नो वन? ओके, यस Zainab. Amen? Sir, we could calculate the derivatives of both the curves and put them equal to each other because since they're parallel, they'll have the same gradient. You see the tangents are parallel to each other at this point. That means उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है. टेंजेंट्स की सेम डायरेक्शन है. जब टेंजेंट्स की सेम डायरेक्शन है इसका मतलब है टेंजेंट्स के ग्रेडियंट से इक्वल है. दोनों टेंजेंट्स के सेम ग्रेडियंट होएगा यहाँ पे. तो टेंजेंट का ग्रेडियंट वही होता है जो कर्व का ग्रेडियंट होता है. तो इस पॉइंट के ऊपर जब x की वैल्यू c है, दोनों कर्व्स के सेम ग्रेडियंट्स हैं. और ग्रेडियंट्स कैसे आते हैं आपके पास? डेरिवेटिव से आते हैं. Let me write that here. Part 3. We are basically told when x equals c, both curves have the same gradient. Okay? आप दोनों को डिफरेंशिएट करें. आपके पास एक फंक्शन है y equals 9 minus x cube. दूसरा फंक्शन है y equals 8x raised to power minus 3. All you have to do is differentiate both of them and put their derivatives equal to each other. Let's differentiate the first one. Derivative of 9 is 0. Derivative of minus x cube is minus 3x squared.
derivative of 8x raised to power minus 3 is 8 into minus 3 into x raised to power minus 4. Minus 3 से multiply कर दिया, minus 3 में से 1 minus कर दिया, that gives you minus 24 over x raised to power 4. Now, since they have the same gradients, that means their derivatives are going to be equal as well. So we just equate their derivatives and see what that gives us. Minus 3x squared equals minus 24 over x raised to power 4. We get minus 3x raised to power 6 equals minus 24 from this. And x raised to power 6 equals 8. Now take 6th root of 8 and see what that gives you. Cube root of 8 is 2. So the 6th root is going to be square root of 2. That's the value of x that we have at this point. लेकिन उसने आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी, उसने आपसे कहा c की वैल्यू फिगर आउट करें. x की वैल्यू c के इक्वल है. यहाँ पे हमारे पास ये क्या वैल्यू आ रही है, square root of 2. So you should write at the end that c equals square root of 2. Okay, c equals square root of 2. That's the answer that you're getting. Now your calculator actually might not give you an exact result in this case. So you could also write 1.4. 1.4 क्या आता है? 2 का square root 414 ही होता है? 1.414. Yeah, so c equals 1.414. You could also write that. That's also going to be acceptable. Okay, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं. That's the value of c that you have. ये आपने यहाँ पे figure out करनी थी. ठीक है? That was pretty straightforward. As not much working was required here. बस आपने equate किया derivatives को, derivatives find किया, उनको equate कर दिया, x की value figure out कर ली, and that gets you 4 marks. Question number 23 from the worksheet. Let's try this. It says the diagram shows part of the curve y equals x plus 4 over x, which has a minimum point at M. The line y equals 5 intersects the curve at the points A and B. Find the coordinates of A, B and M. That's the first part. A और B तो points of intersection है इन दोनों graphs के, वो तो हम simultaneously solve करके find कर सकते हैं. M is the turning point. The turning point हम differentiation के through figure out कर सकते हैं. Right? The first part is pretty straightforward. Let me write down those two functions here. One function is y equals x plus 4 over x, and the other line is y equals 5. A and B are points of intersection of these two graphs. Y की value पता है आपको 5? ये इसमें input कर दें. What do we get from that? 5 equals x plus 4 over x. Multiply the whole equation by x. That gives us 5x equals x square plus 4. And we have x square minus 5x plus 4 equals 0. It's a quadratic equation that we get from this. How do we solve this quadratic equation? Factorize कर सकते हैं इसको? It becomes x square minus 4x minus x plus 4 equals 0. We get two factors from this, x minus 4 and x minus 1. So x either equals 1 or 4. The 2 points that you get therefore are 1, 5 and 4, 5. Y coordinate तो 5 है दोनों का, x coordinates के आगे हैं 1 and 4. Is this okay? अब इसमें से कौन सा A है और कौन सा B है? आप ये ग्राफ पे देखें, A का x कोऑर्डिनेट छोटा होना चाहिए, B का बड़ा होना चाहिए. B is on the right side. So A is 1, 5 and B is 4, 5. ये दो पॉइंट्स तो आपने फिगर आउट कर लिया. ठीक है? Now, what about the point M? That's the turning point of this graph. टर्निंग पॉइंट कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? डिफरेंशिएट करेंगे, उसको 0 से इक्वेट कर देंगे. लेट्स डू दैट.
the curve that we have is y equals x plus 4x raised to power minus 1. This is the equation of the curve. Let's differentiate it. dy over dx equals x का derivative 1 होगा plus minus 1 into 4x raised to power minus 2, and that gives us 1 minus 4 over x squared. That's the derivative. We put this equal to 0 because we're looking for the turning point. X square से multiply कर दें पूरी equation, and that gives us x square minus 4, or you might find it easier if you do this instead. 4 over x square equals 1, and that gives us x square equals 4, and x equals plus minus 2. ये x की वैल्यूज आ गई हैं आपके पास. आपको ग्राफ पे नजर आ रहा है जो पॉइंट m है दैट हैज अ पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट, वो राइट साइड के ऊपर है. तो आप नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसिडर करेंगे यहाँ पे. You'll say the value of x has to be positive. That means x is equal to plus 2. What about the corresponding y value from that? फंक्शन में इनपुट कर दें 2 plus 4 over 2, and that gives us y equal to 4. So the point m therefore is 2 and 4. ये आपके पास m के कोऑर्डिनेट्स आ गए. ये तीन आपको पॉइंट्स फिगर आउट करना था. Any problem with this? ये ठीक है? We have the point A, B, and M now. Let's look at the second part. The second part says, find the volume obtained when the shaded region is rotated 360 degrees about the x-axis. अच्छा, हम वॉल्यूम जब कह रहे थे, चलो इस पर बाद में जाएंगे. Volume obtained when the shaded region, this is the shaded region, this is rotated about the x-axis. क्या करेंगे इसमें? Shaded region is rotated about the x-axis. Any ideas? Yes, Zainab? X axis के about rotate करें. Pi y square dx, ये formula use कर लें किसके ऊपर? From A is 1 and B is 4. From 1 to 4 ये formula use कर लें. कौन सी curve के ऊपर? इस curve के ऊपर. Right? y equals x plus 4 over x के ऊपर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें 1 से लेकर 4 तक. Will that work? ये आपको क्या देगा अगर आप ये उसके अंदर इनपुट करेंगे? ये आपको देगा कि कर्व और x एक्सिस के दरमियान में जो शेडेड रीजन है, अगर आप इसको रोटेट करते हैं अबाउट x एक्सिस तो वो कितना वॉल्यूम आता है. ऊपर वाला वॉल्यूम नहीं देगा आपको. ये जो नीचे इसके एरिया है बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस, येलो वाला, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम. इस लाइन के नीचे जो एरिया है उसको रोटेट करने से जो आएगा, सिलेंडर का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास उसका भी तो फंक्शन दिया हुआ है, उसको भी आप इंटीग्रेट इसी फॉर्मूला में डालें, वो आपके पास आ जाएगा. डज दैट मेक सेंस? दिस इज एरिया बिटवीन टू ग्राफ्स. ग्राफ्स के दरमियान वाले एरिया को आपने रोटेट करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एरिया बिटवीन टू ग्राफ्स, that is equal to volume of revolution of the area under the upper graph minus the volume of revolution of the area under the lower graph. आप दोनों वॉल्यूम्स निकाल लें, जो भी बड़ा आ रहा है उसमें से छोटे वाला माइनस कर दें. essentially that's what you have to do. Okay, assuming कि आपकी वर्किंग ठीक है ऑफ कोर्स, तो जो बड़ा आ रहा है उसमें से छोटा वाला माइनस कर दें. ठीक है,
तो ये हम ये वाला केस यूज़ करेंगे जहाँ पे दो ग्राफ्स के दरमियान में एरिया है, उसको रोटेट करें तो हम इसको दो पार्ट्स में कर सकते हैं। कहते हैं लेट्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द एरिया अंडर द कर्व, और फिर उसमें से उसको माइनस कर दें एरिया अंडर द लाइन में से। Volume of revolution for area under the curve, that's what you have to find first. The curve has this equation, y equals x plus 4 over x. ये आपके पास कर्व की इक्वेशन है। और दूसरा आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन फॉर द एरिया अंडर द लाइन दैट यू हैव विच इज y इक्वल्स 5। ये आपका दूसरा फंक्शन है। इन दोनों पे वॉल्यूम फॉर्मूला लगाएंगे मुनीबा। वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। फातिमा यू हैव फेल्ड। y इक्वल्स, अब तो आपको चुप कर जाना चाहिए। y इक्वल्स x प्लस 4 ओवर x, दैट्स वन फंक्शन, एंड द अदर फंक्शन इज y इक्वल्स 5, ये दूसरा फंक्शन है। इन दोनों का वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करें अबाउट द x एक्सिस। व्हाट्स द फॉर्मूला दैट वी हैव फॉर दैट? vx is pi integral of y square with respect to x। ये दोनों पे अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले y स्क्वायर फिगर आउट करना पड़ेगा। लेट्स डू दैट फॉर द फर्स्ट फंक्शन। y स्क्वायर इक्वल्स x प्लस 4 ओवर x होल स्क्वायर। इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इज इट अ लीनियर फंक्शन? अंदर है x की पावर 1 आ रही है मुनीबा, ये लीनियर फंक्शन नहीं है। अंदर वाला पार्ट लीनियर है कि नहीं है? अंदर वाला पार्ट लीनियर है कि नहीं है? x डिवाइड हो रहा है, x की पावर -1 आ रही है, 1 नहीं आ रही। लीनियर होता है m x प्लस c फॉर्म का। न्यूमरेटर में x आ सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। 4 ओवर x का ग्राफ तो कर्व होती है ना, तो एक रेसिप्रोकल फंक्शन है। इट्स नॉट अ लीनियर फंक्शन, यू हैव टू एक्सपैंड इट फर्स्ट। पहले एक्सपैंड करना पड़ेगा, उसके बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेट्स एक्सपैंड दिस, यहीं पे एक्सपैंड कर लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसकी एक्सपेंशन क्या हो जाएगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x स्क्वायर्ड प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 ओवर एक्स प्लस 4 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, एंड दैट सिंप्लीफाइज टू x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 16 ओवर x स्क्वायर विच इज x रेज़्ड टू पावर -2। ये आपके पास y स्क्वायर आ गया फर्स्ट फंक्शन का। दूसरे फंक्शन का y स्क्वायर क्या आएगा? जस्ट 25। ये क्लियर है सबको? अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें, देखें आपके पास क्या आता है। वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द एरिया अंडर द कर्व पाई इंटू इंटेग्रल ऑफ y स्क्वायर विच इज x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 16 x रेज़्ड टू पावर -2। इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लिमिट्स क्या हैं? 1 to 4, ये लिमिट्स इनपुट करनी है। ठीक है ईमान? 1 to 4 लिमिट्स इनपुट करनी है। इंटीग्रेट करके लेट्स इंटीग्रेट दिस फर्स्ट। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? x क्यूब ओवर 3 प्लस 8x प्लस 16x रेज़्ड टू पावर -1 ओवर -1। ये आपके फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट हो गया। इसमें लिमिट्स आप डाल देंगे 1 to 4। लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट बिफोर वी डू दैट। x क्यूब ओवर 3 प्लस 8x माइनस 16 ओवर x, ये आपका इंटीग्रल आ गया। इसमें लिमिट्स इनपुट कर दे। लिमिट्स इनपुट करके आपने दिखानी है, उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं पाई इंटू 4 क्यूब ओवर 3 प्लस 8 इंटू 4 माइनस 16 ओवर 4। Subtract from that
1 cube over 3 plus 8 into 1 minus 16 over 1. What do we get from the first bracket? First bracket से 148 over 3 minus, so that becomes plus minus 23 over 3. ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 57 pi. That's the volume of revolution of the curve of the area under the curve about the x-axis. ये क्लियर है? अब इसी तरह से आप दूसरा वॉल्यूम फिगर आउट कर लेंगे. इसमें क्या होएगा? वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ 25 अंदर आ रहा है सर. इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. लिमिट्स फ्रॉम 1 to 4. इसकी इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगी? 25x. Limits from 1 to 4, and that is going to become 25 into 4 minus 25 into 1, and that gives us 75 pi. This is the volume of revolution of the straight line. Let's call this V1. Let's call this V2. आपके पास दोनों वॉल्यूम्स आ गए हैं. इनको आपने सबट्रैक्ट कर लेना है. जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटा वाला माइनस कर दें. इट्स ऑब्वियस फ्रॉम द डायग्राम एज वेल. जो लाइन के नीचे वाला एरिया है वो ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा आना चाहिए. कर्व के नीचे वाला एरिया कम है, उसका वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन भी कम आना चाहिए. तो हमारे पास 75 पाई और 57 पाई यहाँ पर आ गए. तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम फिर क्या हो जाएगा? वी जस्ट फाइंड देयर डिफरेंस. 75 pi minus 57 pi, and that gives us 18 pi. That's our final result. Make sense? दो diagrams के दरमियान में आपको volume find करना हो तो this is what we do for that. Okay, let's do this. Question number 39, and then we end for this class. The diagram shows the line y equals x plus 1 and the curve y equals square root of x plus 1. We have two graphs here. एक straight line है, एक curve है. They meet at 2 points, -1, 0 and 0, 1. We need to find the area of the shaded region. That's the first part. And then in the second part, we need to find the volume obtained when the shaded region is rotated 360 degrees about the y-axis. It's a 12-mark question, right? Let's start with this. Area of the shaded region. It's the area between two graphs. तो क्या करेंगे? दोनों के अलग अलग एरियाज फिगर आउट कर लें, उनको सबट्रैक्ट कर लें. इस रीजन के एरिया तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ट्रायंगल को यूज़ करके. आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट. ट्रायंगल के एरिया आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा, वो आप निकाल सकते हैं. फिर आप क्या करें? कर्व और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों में से कोई भी एरिया आप निकाल लें. ठीक है, दोनों सेम ही आएंगे आपके पास. उसको आप दोनों तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं. जो मैंने एरिया शेड किया है यहाँ पे, दिस एरिया कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो एज द एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द वाई एक्सिस. दोनों में से किसी भी तरह कर सकते हैं. ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर इफ यू आर लुकिंग फॉर एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस, अगर आप एक्स एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वाई सब्जेक्ट होएगा. अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसके लिए. ठीक है, so you have to keep that in mind. This is the curve that we have, square root of x plus 1, and this is the line that we have, x plus 1. इस क्वेश्चन से रिलेटेड है? सेक्टर भी नहीं हो सकता? अच्छा, why is this not a sector? So that's a good question. Why can't we say it's a sector with center O? ये भी 1 है लेंथ, ये भी 1 है, तो 1 रेडियस का सेक्टर नहीं हो सकता है. हाउ डू वी नो कि ये कर्व जो है ये एक सर्कुलर आर्क का पार्ट है?
वी डोंट नो दैट, राइट. सर्कुलर आर्क का पार्ट है ये तो हमें नहीं पता. इनफैक्ट वी नो कि ये सर्कुलर आर्क का पार्ट नहीं है. आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल आती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1, यही आप कह रही है ना? ओरिजिन सेंटर और रेडियस 1, उसकी क्या इक्वेशन होगी? ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, x माइनस ए होल स्क्वायर. इक्वेशन क्या होती है? y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर. ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल है. इस पर इनपुट करें, सेंटर ओरिजिन है, सो दैट्स x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर. आर इज़ 1. इससे आपको मिलता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1. अगर आप y को सब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे क्या आता है आपके पास? y स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स, और इवन एट दिस पॉइंट यू कैन रिकग्नाइज दीज टू आर नॉट द सेम. इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो इस फॉर्म की होती है. सो इट्स नॉट अ सर्कल. इन एनी केस यू आर नॉट गोइंग टू एज्यूम दैट इट्स अ सर्कल. जब भी आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है तो वो सर्कल नहीं होगी, राइट? Okay, so we have the equation of the curve given. We need to find first the area between the graph and the x-axis. Let's do that. उसका formula क्या होता है? Integral of y with respect to x. Limits क्या use करेंगे? Limits क्या होंगी? -1 to 0. हम x axis वाला formula use कर रहे हैं, इसमें x के limits use करेंगे. -1 to 0. Now you just have to integrate this, input the limits and see what that gives you. X plus 1 whole raised to power 1 over 2. ये आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इस पर हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली. अंदर वाला पार्ट लीनियर है, वी कैन यूज द पावर रूल. इट बिकम्स x plus 1 whole raised to power 3 over 2 divided by 3 over 2 and also divided by the derivative of the part that is inside the bracket, which is 1. इसमें आपने limits input करनी है, but before that you should just simplify this first. It becomes 2 into x plus 1 whole raised to power 3 over 2 divided by 3, and the limits are from -1 to 0. Input the limits now and see what that gives you. 2 into 0 plus 1 whole raised to power 3 over 2 divided by 3 minus 2 into -1 plus 1, which is just going to become 0. And you're left with 2 over 3. This is the area between the curve and the x-axis. ये क्लियर है? ये आपके पास एरिया आ गया. Area between curve and x-axis. अब दूसरा फंक्शन आपके पास है y equals x plus 1. If you want, you can integrate that as well and input the limits from -1 to 0. आप कर सकते हैं. Otherwise, you can see कि ये triangle है, तो आप बस triangle वाला formula लगा दें, उससे भी कर सकते हैं. So that's your choice. Triangle is going to be much simpler in this case. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 1 over 2 into base into height, which is 1 into 1. So this turns out to be 1 over 2. Area of triangle 1 over 2 आ गया. ठीक है? So what's the shaded area now? 2 over 3 minus 1 over 2. That gives you 1 over 6. That's all that you have to do here. That's 5 marks. That was pretty straightforward for 5 marks. Shaded area आपके पास आ गया. 2 over 3 minus 1 over 2, which is 1 over 6. ठीक है? This is the shaded area that we have. Any problem with this? No? Okay, let's move on. Part 2 देखें इसका. Part 2 में उसने कहा है find the volume obtained when the shaded region is rotated
360 degrees about the y-axis. Now it's rotation about y-axis. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? y-axis वाला. इसमें दूसरा फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते. अब x-axis के अबाउट कर लें. इस तरह एरिया में हम दोनों कर सकते थे, वॉल्यूम में आप दोनों नहीं कर सकते. जो उसने रोटेशन कही हुई है जिस एक्सिस के अबाउट, आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, दूसरा फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते. ठीक है, लेट्स डू दिस. वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? यू नीड टू रिमेंबर दैट. Vy is equal to pi into integral of y square, no, the other way around, x square dy. ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट y एक्सिस है. अब क्या करेंगे इसमें, कैसे वॉल्यूम आएगा? एनी आइडियाज? शेडेड एरिया को रोटेट करना है अबाउट द y एक्सिस. यस फातिमा? So we start by finding the volume of revolution of the curve about the y-axis. Curve का अलग से वॉल्यूम निकालेंगे और फिर आप इस लाइन के, मतलब कर्व का मतलब है कर्व और x एक्सिस के दरम्यान में जो पूरा शेडेड और y एक्सिस के दरम्यान में जो शेडेड रीजन आ रहा है, इस पूरे को रोटेट करके जो वॉल्यूम आएगा वो फिगर आउट करेंगे. उसमें से माइनस कर देंगे इस एरिया को रोटेट करने पे जो वॉल्यूम आएगा वो माइनस कर देंगे उसमें से, एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट. अब ये ट्रायंगल को रोटेट करने वाला हम डायरेक्टली किसी तरह से कर सकते हैं. ये कोन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे. इफ यू वांट यू कैन यूज दैट, बट आई थिंक मोस्ट पीपल गेट कंफ्यूज्ड विद दैट. आप बस सिंपल इंटीग्रेशन ही करें. वॉल्यूम वाले में डोंट थिंक ऑफ स्टैंडर्ड शेप्स, जस्ट अप्लाई इंटीग्रेशन डायरेक्टली. दो फंक्शंस हैं आपके पास. लेट मी राइट डाउन दोज टू फंक्शंस हियर. वन इज y equals x plus 1 whole raised to power 1 over 2 and the other is y equals x plus 1. You need to input x square in the formula. x square कैसे आएगा आपके पास? आपको दोनों में से x square को सब्जेक्ट बनाना है. फर्स्ट कर्व में से आप x को सब्जेक्ट बना लें. देखें आपके पास क्या आता है उससे. ओके, कर्व में x square का सब्जेक्ट बनाए. यू हैव टू स्क्वायर बोथ साइड फर्स्ट ऑफ ऑल. इट बिकम्स y square equals x plus 1. Then take 1 to the other side first, so that it becomes x equals y square minus 1. And now square both sides. That gives you x square equals y square minus 1 whole squared. ठीक है. अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है. इसकी इंटीग्रेशन के डायरेक्टली पॉसिबल है. y स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? जो अंदर वाला पार्ट है, फंक्शन के अंदर वाला पार्ट, दैट इज नॉट लीनियर. इस पे पावर रूल नहीं अप्लाई हो सकता. तो क्या करना पड़ेगा? पहले इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा. सो इट बिकम्स y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1. y स्क्वायर आपके पास ये आ गया और x स्क्वायर ये आ गया. ठीक है. नो, y raised to power 4, sorry. So it's y raised to power 4 minus 2y square plus 1. That's what you get when you expand this thing. ये आपको अब फॉर्मूला में इनपुट करना है and you'll get the result. इसी तरह से दूसरा आप फंक्शन देखें, उसमें आपको x स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है. You first take 1 to the other side and that gives you x square equals y minus 1 whole square. Do we need to expand this one? इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है. इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं. दैट्स योर चॉइस. ओके, अब दोनों इंटीग्रेट कर लें, दोनों में वो फॉर्मूला अप्लाई कर लें. देखिए आपके पास क्या आता है. इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ y raised to power 4 minus 2y square plus 1. लिमिट्स क्या है इसके अंदर? लिमिट्स, इसमें कौन सी लिमिट्स यूज़ करेंगे? y एक्सिस वाली लिमिट्स 0 to 1. ठीक है, ये लिमिट्स यूज़ करनी है 0 to 1. लेट्स डू दैट. 0 to 1 लिमिट्स डाल दें. सी व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस.
y raised to power 5 over 5 minus 2y cube over 3 minus y, इसको with respect to y इंटीग्रेट करें तो y की टर्म्स में आ रहा होगा. Limits are from 0 to 1 plus 5. अब इसमें लिमिट्स इनपुट कर दें, 1 इनपुट करते हैं तो आपके पास आता है 1 over 5 minus 2 over 3 plus 1. Subtract from this the case when you get zeros. What does this give you? ये क्या आता है? 8 over 15. We also are missing a pi here. Pi बेशक आप end पे भी लगा सकते हैं, that's acceptable. लेकिन भूलना नहीं है बस end पे. That's okay. Pi जो है वो normally आप end पे भी add कर सकते हैं, that's allowed. 1 over 5 minus 2 over 3. Is it turning out to be negative? अच्छा plus 1 भी है, sorry. क्या आता है? 8 over 15. 8 over 15 pi. This is the volume of revolution of the area between the curve and the y-axis. उसका volume of revolution आ गया. Do the same thing for the other one. Vy is equal to integral of y minus 1 whole squared with respect to y. Limits क्या हैं? 0 to 1. And we have a pi outside as well. इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? y minus 1 whole cube divided by 3 and 1. Limits इसमें input करनी है from 0 to 1. Let's input the limits here as well. Pi आपका बाहर रहेगा, अंदर आपके पास आ जाएगा 1 minus 1 whole cube over 3. Subtract from that the case when you input 0. That gives you 0 minus 1 over 3 whole cube. ये क्या आता है? 1 over 3 pi? Okay, sorry about that. So ये हमारे पास क्या आता है? 0 minus 1 whole cube over 3. This gives us 1 over 3 pi. ये आपके पास सेकेंड वॉल्यूम आ गया. ठीक है, दोनों वॉल्यूम्स आ गए. इनका डिफरेंस फाइंड कर लें. What's the required volume that you get? It's 8 pi over 15 minus pi over 3. What's this value? Pi over 5, and that is the volume that we were looking for. Question number 25 from the worksheet. It says the diagram shows part of the curve y equals 1 over 3x plus 1 whole raised to power 1 over 4. And the curve cuts the y-axis at A and the line x equals 5 at B. You can see this is the curve that they're talking about. This curve cuts the y-axis at A, and there's another line x equals 5. It cuts that at B. So this point here is 5 on the x-axis. We first need to show that the equation of the line AB is y equals minus 1 over 10x plus 1. Okay, now how do you find equations of straight lines? Line AB is a straight line, so we're talking about this line. Straight line की equation के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं. एक आपको point चाहिए होता है और दूसरा आपको line का gradient, उसकी direction चाहिए होती है. These are two things that you need. Do we have a point? Well, not really. We have x coordinates of 2 points, but not their y coordinates. तो हम वो figure out कर सकते हैं. A और B ये दोनों points निकाल सकते हैं. जब ये points आ जाएंगे तो उनका gradient भी आ जाएगा और फिर हम equation of line लिख देंगे directly. So that's pretty straightforward. The first part of this, let me write that down here. We have y equals 1 over 3x plus 1 whole raised to power 1 over 4. What we need to do is we once need to input x equals 0 in this, and then we can input x equals 5. उससे हमें corresponding values मिल जाएंगी a और b के y coordinates की. ठीक है? Let's input x equals 0 first of all, because a is the y-intercept. Y-intercept पे x की value 0 होती है. हम corresponding value for y निकाल लेते हैं यहाँ से. Y equals 1 over 3 into 0 plus 1 whole raised to power 1 over 4.
and y turns out to be 1 from this. The coordinates of the point A turn out to be 0 and 1. Okay. Then we have the other curve. In fact, we have the same curve, but we have another point there, which is when x is equal to 5. So we input x equals 5 in this now. And that gives us 1 over 3 into 5 plus 1 whole raised to power 1 over 4. And from this we get 1 over 16 whole raised to power 1 over 4, which should be 2. So y equals 1 over 2 from this. Y की value either 1 over 2 आ गई. So we have the coordinates of b as well, which are going to be 5 and 1 over 2. So हमने x equals 5 input किया because we knew b के ऊपर x की value 5 है, उससे corresponding value आ गई b के y coordinate की. जब वो भी आ गया, अब हमारे पास 2 points आ गए, a और b. We have to find the equation of the line AB. All we have to do is find the gradient. That turns out to be 1 over 2 minus 1 divided by 5 minus 0. You can see what this turns out to be. 1 over 10 minus 1 is minus 1 over 2. Minus 1 over 2 divided by 5. That will be 1 over 10. Now you can write down the equation. Since you know the y-intercept in this case, जब y-intercept पता होता है आपको, तो y equals mx plus c फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं. उसके अंदर इनपुट कर दें y equals minus 1 over 10 x plus c. That's the y-intercept, which is 1. This is what we were looking for. ये आपने first part में prove करना था. Equation of line AB is minus half x plus 1. Okay, that was the first part, pretty straightforward. Let's look at the second one now. In the second part, it says, find the volume obtained when the shaded region is rotated 360 degrees about the x-axis. Okay, so now this shaded region is rotated 360 degrees about the x-axis. Now this region is between two graphs, right? It's not a region between graph and x-axis, a graph or y-axis. It's a region between two graphs. अब इसका वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन आप कैसे निकालते हैं? आप एक का वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन निकालेंगे और उसमें से आप माइनस कर देंगे दूसरे का वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन. You have two graphs. One is this curve. कर्व के और एक्स एक्सिस के दरम्यान में जो एरिया है, that's this region. जब आप कर्व पे फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन वाला, तो आपको इस एरिया का वॉल्यूम मिलेगा. जब आप स्ट्रेट लाइन पे लगाएंगे तो आपको इस पूरे एरिया का वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन मिलेगा. तो जो आपको चाहिए वो कैसे आएगा इन दोनों के डिफरेंस से. I don't know why it's 9 marks by the way. Let's see, हो सकता है इसमें कोई complication हो because it doesn't look that complicated. अच्छा, let's see इसको करते हैं तो हमारे पास क्या इशू आता है. Let's insert this here. Part 2. So we have a curve and a straight line. इन दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं. कर्व की इक्वेशन हमारे पास क्या है? y equals 1 over 3x plus 1 whole raised to power 1 over 4. We can write that as 3x plus 1 whole raised to power minus 1 over 4 in power form. जो दूसरा ग्राफ है लाइन, उसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई है minus half x minus 1 over 10x sorry plus 1. ये दो फंक्शंस हैं. आपको वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करना है अबाउट द एक्स एक्सिस. सो एक्स एक्सिस वाला फॉर्मूला यूज करना है. लिमिट्स भी एक्स एक्सिस के लेंगे. द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 5. 0 to 5 आपके लिमिट्स है. ये आपको इनपुट करनी है उसके अंदर. Now what's the formula that we have? This is what the formula looks like. Volume of revolution about the x-axis is given by pi into integral of y square with respect to x. Right? That's the formula that we are going to be using. Now, we need to input y square in this. तो हम पहले क्या करते हैं? Y square evaluate कर लेते हैं. Y square is equal to 3x plus 1 whole raised to power minus 1 over 4. इस पूरे का आपको स्क्वायर करना है. जब इसका स्क्वायर करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? 3x plus 1 whole raised to power minus 1 over 2. मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? 2 into minus 1 over 4 मल्टीप्लाई होगा तो minus 1 over 2 आ जाएगा. Y square turns out to be this.
Let's do the same thing on the other function as well. उससे हमारे पास y square क्या आता है? -1/10x plus 1 whole squared. अब ये अंदर वाला पार्ट लीनियर है, तो हमें इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, इसको इंटीग्रेट करना है हमने. इसको डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. जब अंदर वाला पार्ट लीनियर होता है तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली भी पॉसिबल होती है. ओके, वी कैन डू दैट. तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे, इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे. अब दोनों पे अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई कर दें और देखिए आपके पास क्या आता है. लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑन दिस फर्स्ट फंक्शन. पाई आप बाहर रहने देंगे, अंदर आपके पास क्या आ गया? 3x plus 1 whole raised to power -1/2 with respect to x. The limits are from 0 to 5. You have to just evaluate this in the first part. How do you integrate it? Power rule apply kar dein. 3x plus 1 whole raised to power 1/2. You add 1 to the power, it becomes 1/2. Divide by this new power. And also divide by the derivative of the part that's inside. 3x plus 1 ke derivative se divide kar diya, 3 se divide kiya aapne. Now input the limits from 0 to 5. Before that, in fact, it's better to simplify this a bit. 2 will go to the numerator. And it's going to become, in fact, a constant को उठा के ना बाहर ही लिख सकते हैं. That's going to make things easier. अगर मैं constant को बाहर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है. 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे रहा, 2/3 हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है. ये जो कांस्टेंट था पूरा, उसको उठा के हमने बाहर लिख लिया. We can do that, right? Because constant जो multiply हो रहा होता है उसको आप बाहर इस तरह से लिख सकते हैं. What are we left with inside? 3x plus 1 whole raised to power 1/2. Now we just need to input limits here from 0 to 5. Let's input 5 and then subtract from that the case when you have 0. So we get 2 pi over 3 into 3 into 5 plus 1 whole raised to power 1/2 minus 3 into 0, that's a 0, plus 1 whole raised to power 1/2. Close the brackets and now simplify this. This gives you 2 pi over 3 into 16 ka square root, that's 4, minus 1, and that gives us 3 into this. हमारे पास 2 pi बचेगा इससे, ठीक है. That's the volume of revolution that we get for the curve. Curve का ये आ गया. We do the same process on the line and see what we get from that. इसको भी ये कर लें. Vx equals pi into integral of -1/10x plus 1 whole raised to power 2. इसको इंटीग्रेट करना है from 0 to 5, ठीक है. इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं because the part inside the bracket is linear. हम पावर रूल इस पे अप्लाई कर सकते हैं. You can say it becomes -1/10x plus 1 as it is. Add 1 to the power, so it becomes power 3. And then this whole thing divided by 3 and also divided by -1/10, which is derivative of the part inside the bracket. अंदर वाले part का derivative क्या है? -1/10, उससे भी हमने multiply कर दिया, ठीक है. Now we simplify this and see what that gives us. Again, constant को उठा के बाहर लिख दें. ये जो पूरा constant है, इसको जो multiply हो रहा है पूरे expression के साथ, इसको आप उठा के बाहर लिख दें. उससे हमें क्या मिलेगा? माइनस, ये 10 ऊपर चला जाएगा, राइट, न्यूमरेटर में. -10 pi over 3. That's what we have outside. And then we're left with -1/10x plus 1 whole raised to power 3 inside. इस पे limits apply कर दें from 0 to 5. Let's input 5 and 0 in this. Outside we have -10 pi over 3. Let's input 5. That gives us -5/10 plus 1. Subtract from that the case when you input 0. That gives you -0/10, which is a 0, plus 1 whole raised to power 3. ठीक है. Let's simplify this. This gives you -10 pi over 3 whole multiplied by, this is -1/2 plus 1. So that's going to be 1/2 whole raised to power 3
minus 1. And from this we get minus 10 pi over 3 into 1 over 8 minus 1, which is going to be minus 7 over 8. Multiply this, and that gives you 70 over 24. And that should be 35 over 12. That's what we get from this. Can somebody confirm this? Is ये याद है? Yes, sir. ठीक है, ये volume of revolution आ गया दूसरे से. All you have to do now is find their difference. जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला माइनस कर दें. लॉजिकली भी आपको नजर आ रहा है लाइन के नीचे वाला एरिया ज्यादा है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन भी ज्यादा होगा ऑफ कोर्स. तो लाइन वाला वॉल्यूम ज्यादा है, उसमें से माइनस कर दें दूसरा वाला, and you will get the required volume of revolution. This turns out to be 35 pi over 12 minus 2 pi, and that should give you 11 pi over 12. That is what we were looking for. Is this answer correct? Maria, does that make sense? Yes, sir, I get it. Thank you.